हेलो हमज़ा भाई। वो मेरे स्नीकर्स 8 महीने हो चुके हैं और अभी तक कुछ जवाब नहीं आ रहा आपकी तरफ से। यार भाई आजकल शिपमेंट्स हमने निकाल दी हुई है, लेकिन वो अभी कार्गो कंपनी के पास ही पड़े हुए हैं शूज़, क्योंकि उनको अभी अलाउ नहीं किया हुआ गवर्नमेंट ने, ना चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अलाउ किया है ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि Nope. Ho, what is up, beautiful people? Assalamu alaikum, and I hope you guys are doing well. Thank you for stopping by, and if you are here, then I'm assuming that you love sneakers, and if you love sneakers, then you are at the right place. This is your boy Zaneer Ali Sani from Sneakers and Zaneer with another video on this channel. If you're new here, then make sure you subscribe to my channel and hit the bell icon to know the latest updates of my videos. You can follow me on my Instagram at Zaneer Sani to know the latest updates of my giveaways and my recent video. Also, we are going to hit 500 soon, so hit that red button right now. And you can show some support on my Patreon. Patreon link will be in the description. Make sure you click on that. And with that said, title पढ़ के आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आज हम एक ऐसे स्नीकर के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए मैंने तकरीबन 8 महीने से भी थोड़ा सा ज़्यादा इंतज़ार किया है। बिकॉज सब्र का फल मीठा होता है, ये कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी। तो मेरे साथ भी शायद ऐसा ही सीन था। तो आपने मैसेज सुन लिया होगा और आपको पता है कि कुछ महीनों से जो है चाइना से जितनी भी शिपमेंट्स थी वो सब की सब बंद थी। इस वजह से जो है आई ऑर्डर्ड अ यूए पेयर ऑफ ट्रेविस स्कॉट एसबी डंक्स and those sneakers were stuck in the cargo for about 8 months and finally that sneaker came to me last month और हम जो है ये वीडियो अब बना रहे, थोड़ा सा लेट हो गया, कोई मसला नहीं है, it's okay, but still we are here and we are going to do unboxing of my favorite sneaker. I have included that sneaker on my top 5 contender for sneaker of the year. If you haven't watched that video, here is the link, go and check it out. And today we are gonna talk about Travis Scott SB Dunks. So what I think about SB Dunks Travis Scott is that I think that Travis Scott SB Dunks was a amazing collab and it was supposed to be a sneaker of the year until Chunky Dunky happened. And I think that Travis Scott did amazing job. We are gonna check that out. And I think that Travis Scott SB Dunks were enough to compete with Air Jordan 1 Travis Scott High, because you know that I love that sneaker. I consider that sneaker as 2019 sneaker of the year. But I think that SB Dunk, he did great job in SB Dunks, and today we are gonna discuss about that. So here is the box of Travis Scott SB Dunks. ये उल्टा है, हमसे सीधा कर लेते हैं. So here is the box and this is a friends and family box. और ये जो है हमने friends and family के बारे में पिछली वीडियोस में भी बात की है. And this box is the newest release box. मतलब 2020 में जितने भी SB releases हो रहे हैं वो सारे के सारे इस बॉक्स में हो रहे हैं. Other than that, there is a friends and family box जिसके बारे में हम फिर कभी किसी वीडियो में बात करेंगे. फ्रेंड्स एंड फैमिली बॉक्स एक्चुअली में होता क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. सो बिफोर रिलीजिंग दिस स्नीकर ऑन स्नीकर्स ऐप, ट्रेविस स्कॉट रिलीज्ड दिस स्नीकर ऑन हिज वेबसाइट and that release were in special box and that special box was this one. तो ये जो स्पेशल बॉक्स है ये ट्रेविस स्कॉट की जो वेबसाइट है उस पर ये रिलीज हुआ था एंड वेरी few lucky people got that sneaker. और ये जो है फ्रेंड्स एंड फैमिली बॉक्स में है. सो दिस फ्रेंड्स एंड फैमिली बॉक्स इज़ वेरी अमेजिंग. अगर आपको जानना है कि नॉर्मल एसबी बॉक्स कैसे नज़र आते हैं, सो यू कैन चेक माई चंकी डंकी वीडियो. आई हैव शोन यू द एसबी डंक बॉक्स, द न्यूएस्ट 2020 एसबी डंक्स बॉक्स विच इज़ इन मल्टी कलर. सो यू कैन चेक दैट आउट. एंड दिस इज़ अ फ्रेंड्स एंड फैमिली बॉक्स. तो ये जो ना बहुत ही प्यारा सा बॉक्स है एंड दिस बॉक्स हैज़ हाईलाइट ऑफ the materials which has been used in this sneaker. So I really love
that they have used those highlights on the boxes as well. तो अगर आप फ्रंट साइड पे देखेंगे तो ऑन फ्रंट साइड यू विल सी कि इसके जो बॉर्डर्स बने हुए हैं, दीज बॉर्डर्स आर इन बैंडाना प्रिंट. और बैंडाना प्रिंट जो है बहुत ही महंगा प्रिंट है. यू हैव सीन पीपल वेयरिंग दैट बैंडाना स्कार्फ, और जो है ना ये बहुत ही महंगा होता है. तो ये जो प्रिंट है, दिस प्रिंट इज़ ऑन द बॉक्स and this print is also on the sneaker as well, जो हम बाद में बात करेंगे जिसके बारे में. So you can see that the bandana print is on the border, and on the middle you can see that there is this Nike SB written with the swoosh, and this is written in pink color, which is very nice. If you're gonna look at the side of this box, so you can see that there is this Nike SB written with the swoosh. However, ये जो print है, दिस प्रिंट इज ऑल्सो ऑन द स्नीकर. इस प्रिंट को हम कहते हैं प्लेड प्रिंट, या फिर हम आम ज़बान या पाकिस्तानी ज़बान में से चट्टाई प्रिंट भी कहते हैं, बट दिस प्रिंट इज़ नोन एज प्लेड प्रिंट. तो ये जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सा प्रिंट है, और दिस इज़ वेरी नाइस. एंड ऑन द बैक साइड ऑफ द बॉक्स यू कैन सी कि ये जो है पिंक जो है यहाँ पे कलर यूज़ हुआ हुआ है, और यहाँ पे जो है बैंडाना प्रिंट है, और ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा प्रिंट है. And on the side you can see that there is Cactus Jack written, and on the sizing chart you can see that this sneaker is in size 10 and this sneaker is in size 11.5 in women's sizing. और इस स्नीकर का नाम जो यहाँ पे लिखा हुआ है, this is written Nike SB Dunk Low PRMQS. I have no idea what is PRM, I have no idea what is QS, but it is what it is. It is what it is. It is what it is. हमने बॉक्स के बारे में बात कर ली है. So let's just look what is inside this box. And if you're gonna open up this box, oh my god, this is the main highlight. So if you're gonna look at this paper has a print of bandana which is very amazing. I really love this bandana print. और bandana print जो है बॉक्स में भी है, जूते में भी है, और इसके अंदर जो पेपर होता है उसमें भी है, विच इज़ अगेन वेरी अमेजिंग. जो बॉक्स की पैकेजिंग है उस पर ट्रेविस स्कॉट बहुत अच्छा काम करता है, वी ऑल नो दैट. और ये जो है बहुत ज़बरदस्त सा जो है उसने पैकेजिंग की हुई है. एंड फाइनली हियर इज़ द स्नीकर. Finally, we have a sneaker over here. So this sneaker is known as Nike SB Dunk Travis Scott, and what an amazing sneaker. You know that Travis Scott uses amazing materials in his sneaker, and this is the main highlight of the sneaker. So let's just talk about the sneaker first. So let's first talk about the toe box, because the toe box is the main highlight. So if you're gonna look at the toe box, you're gonna see that there is this amazing color of brown or something like that, but the material is in suede. और ये suede इतना प्यारा है, like I am rubbing my finger and you can see that, मतलब कोई roughness नहीं है, और बहुत ही प्यारा सा है ना ये मटेरियल यहाँ पे यूज़ हुआ है. और ये बहुत ही प्रीमियम थिन suede मटेरियल इज़ यूज्ड ऑन द टो बॉक्स, विच इज़ वेरी नाइस. तो ये पता चलता है कि यार ये जो है ना मतलब अमेजिंग गॉड रेप्लिका है ये. और यहाँ पर ऑन द टंग यू कैन सी दैट देयर इज़ दिस कैक्टस जैक रिटन, और उस कैक्टस जैक जो है द टंग, द मटीरियल विच इज़ यूज ऑन द टंग इज़ द सेम विच इज़ यूज ऑन द टो बॉक्स. वेरी सॉफ्ट, वेरी प्रीमियम फील. इट्स गिविंग मी वेरी प्रीमियम फील. और जो चीज़ मैंने आपसे चंकी डंकी में डिस्कस की थी, दैट वॉज के जो SB डंक्स की जो टंग होती है वो बहुत ही कुशन्ड होती है, बहुत ही मोटी होती है. एंड यू कैन सी दैट ये जो टंग है ये बहुत ही मोटी सी टंग है. आई एम प्रेसिंग इट, तो ये जो है बहुत ही मोटी सी टंग है, which shows that this is amazing. And also one of the main highlight of the sneaker is the bandana print. So you can see that the bandana print is all over the sneaker. You can see that. You can see the bandana print here, and you can see the bandana print on the back side of the sneaker as well. But one of the main highlight of this sneaker is that just in case if you ever get bored of this bandana print, so you can take the blade and you can literally rip off this part, this bandana print, and there is unique elephant print underneath this print. तो ये जो है मुझे बहुत ही ज़बरदस्त सा चीज़ लगी, क्योंकि ट्रेविस स्कॉट लेट्स यू कस्टमाइज योर स्नीकर, विच इज़ अमेजिंग.
और अगर आप इसे रिप ऑफ कर देंगे तो आपका स्नीकर कुछ इस तरीके का दिखेगा. बट आई थिंक दैट आई विल नेवर रिप ऑफ दिस बैंडेना प्रिंट बिकॉज आई लव दिस बैंडेना प्रिंट और मुझे बहुत पसंद है. एंड लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द साइड पैनल ओवर हियर. सो द साइड पैनल हैज़ दिस प्लेड मटीरियल जिसके बारे में हमने बात की. एंड दैट प्लेड मटीरियल इज़ वेरी सॉफ्ट. बहुत ही प्यारा सा जो है मटीरियल यहाँ पे ऑन द साइड पैनल इज़ यूज, which is again very amazing. The outside swoosh is in black colorway, however the inner side swoosh is in baby pink colorway, and this is the reason why there was pink color in the box, because pink color is the traditional what can I say, pink color is a traditional move by Travis Scott. He loves pink color. He uses pink color in his sneakers, so we all know that, we all have seen that. So I really love this mismatch swoosh. You know that I love mismatch things. I love it. So that is the amazing part. And also if you're gonna look at the hair, and if you're gonna look at here, so it says Cactus Records, जो कि हमें on Air Force One's Travis Scott में भी नज़र आए थे. So that is amazing part. And on the back you can see that there is this Nike stitched on the back heel tab. और अगर हम थोड़ा सा क्लोज देखेंगे तो यहाँ पे यू कैन सी दैट कैक्टस जैक इज़ ऑल्सो स्टडेड ऑन द मटीरियल. और ये जो है बैंडेना प्रिंट है यहाँ पे. और अगर हम इसके मिड सोल की बात करेंगे, सो मिड सोल इज़ टिपिकल सेल कलरवे विच इज़ यूजुअली यूज्ड. एंड इफ यू गोना लुक एट द आउटसोल इज़ इन अमेजिंग, कोई लकड़ी का कलर है जो इस पर यूज़ हुआ है. दैट इज़ अमेजिंग. आई लव the whole sneaker. And let's talk about the laces, क्योंकि laces is the highlight of this sneaker. And you can see कि ये जो laces हैं, these are the rope material laces. rope material नहीं कहेंगे, these are rope laces. किसी ने नहीं सोचा था कि rope as a laces इस्तेमाल करते हैं. जिनको नहीं पता rope क्या होती है, आपने कभी ना कभी बचपन में टग ऑफ वॉर तो खेला होगा. तो जो रस्सी हम खींचते हैं उस रस्सी को हम rope कहते हैं. तो उसका छोटा सा साइज़ जो है वो इसमें यूज़ हुआ है. और ये जो रोप है ये बहुत ही डिस्टॉर्टेड सी रोप है. मतलब यू कैन सी कि उस रोप के जो है रेशे निकले हुए हैं और ये बहुत ही डिस्टॉर्टेड सा फील देती है. एंड आई थिंक दैट डिस्टॉर्टेड फील इज़ द अमेजिंग हाईलाइट ऑफ ट्रेविस स्कॉट स्नीकर. वी हैव सीन द डिस्टॉर्टेड फील in Travis Scott Jordan 6s in the tongue of the sneaker. We have seen that, and I really love how he has used those distorted feel in other of his sneakers. तो ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा सीन है. And if you're gonna look at the inner sole, you can see कि ये जो है there is Nike SB written. You can see that. और ये जो है बहुत ही प्यारा सा लुक दे रहा है. एंड आई रियली लव दिस स्नीकर क्योंकि ये स्नीकर जिस मटीरियल से बना है, द प्रिंट्स विच हैव बीन यूज्ड इन दिस स्नीकर एंड ऑल्सो द एबिलिटी टू कस्टमाइज योर स्नीकर, दैट इज़ द मेन हाईलाइट. दैट इज़ लाइक एवरीथिंग टू मी. क्योंकि ये जो छोटी छोटी जो डिटेल्स ट्रेविस स्कॉट करता है, दैट मेक्स हिज स्नीकर एन अमेजिंग स्नीकर. And I really believe that Travis Scott is an amazing designer. And here is the second pair of the same sneaker. The second pair is no different, बिल्कुल same वही sneaker है. And also there is two more laces. One is in black colorway and other is in pink colorway. So you can match this sneaker with pink or black. Let me know which color is going amazing. I love this sneaker, and let me know how do you feel about this sneaker. And here is the on-feet review of Nike Travis Scott SB Dunks.
was my on-feet review of Nike SB Dunks Travis Scott. Let me know, how do you feel about this sneaker? Do you love these sneakers? Do you consider these sneakers as sneaker of the year, or you don't? Let me know. Let me know in the comment section down below. And also, if you're new here, then make sure you like and subscribe to my channel and hit the bell icon to know the latest updates of my videos. You can find me on Instagram @ZaneerIsani to know the latest updates of my videos. This is Zaneer Ali Isani from Sneakers and Zaneer, over and out. Allah Hafiz.